Bismillahirrahmanirrahim. Today's my topic is spermatogenesis. The objectives of the spermatogenesis: you should know the organs of the male reproductive system. Then we will discuss the process of the spermatogenesis and what is spermiogenesis, what is the structure of the male gamete or sperm and its parts. Now first of all, the male reproductive organ: scrotum, testes, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, penis and urethra, and are the parts of the reproductive organ. This is the diagram showing the reproductive organs of the male. These are the testes, and they are enclosed in a sac called the scrotum. This is the scrotum, this is testis, and they are placed in the 2 number of testes, and this is placed in a sac called the scrotum. This is another part called the epididymis. Then this is vas deferens. From vas deferens, these are seminal vesicles, and this is the ejaculatory tract. This is male urethra. The ejaculatory tract open into the male urethra. So the sperms which are formed, spermatogenesis which is occurred in the testes, pass through this route towards the male urethra. Okay, these are the male reproductive organs. Now this is also the diagram showing the male reproductive organ. This is the scrotum, testes, epididymis, vas deferens. This convoluted tubule is called the epididymis. Open into by vas ejaculatory tract open into the urethra, male urethra. This is the male urethra. This is prostate. The male urethra open by passing through the penis into. So this is the route of transformer of the sperm from its point of origin towards the male urethra. Okay. Now the after seeing or discussing the male reproductive organ, the testis is the main organ where the spermatogenesis occur. About the size of the testis is 1.5 to 3 inches in length, and usually the left testis hang slightly lower than the right one. This can come in your BCQ. The testes have 2 primary functions: their production of the sperm and producing the testosterone. Histologically, you will discuss the covering of the testes, the tunica albuginea, tunica vaginalis, and which is located deep to the tunica albuginea. Most of the book says there is no tunica vaginalis in man; it is present only in the female. Inside the testis there are the seminiferous tubules. Now this is the testis, diagram of testis. You can see the testis. This outer layer is called the tunica vaginalis. And this inner side capsule is called the tunica albuginea. From the tunica albuginea, you can see the connective tissue septa passing inside the testis and divide the testis into lobules. Inside this is one lobule. Inside one lobule, you can say this is the convoluted tubules. There are millions convoluted tubules. These are the convoluted tubules. Inside the convoluted tubule, the spermatogenesis occurs. Now we will see the histology of the convoluted tubules for knowing about the spermatogenesis. And these convoluted tubules, here they become straight. Now here they call the straight tubules. After straight, there is a network
of the tubules called the reproductive. This is an important point which come in the OSPI, questions of OSPI. OSPI में अक्सर ये पूछते हैं, find the reproductive straight tubules. So these reti mean network. From these retitubules they again become straight and now called the efferent ductules. These efferent ductules open. This is the epididymis. After these efferent ductules pass, now these are when they become straight and long tubule called the ductus deferens or vas deferens. Okay, this is called the spermatic cord, which is only present in male, not in female. Now we will separately see the seminiferous tubules. Histologically you can see, this is also a diagram showing the seminiferous tubules. Now we are going to histology of the seminiferous tubule. These are one seminiferous tubule, second seminiferous tubule, third, fourth. There will be million of seminiferous tubules, and they are covered by the tunica albuginea, which is a connective tissue capsule. Now this seminiferous tubule, you can see there are the many different type of the cells. This process is going on the spermatogenesis. ये spermatogenesis हो रही है इसके अंदर. अब इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम अगर इनलार्ज करके देखते हैं मजीद, तो ये है, ये वो ट्यूनिका एल्बिजिनिया है जिसमें ये ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं. ठीक है. नाउ इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेल्स? स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. दीज आर द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि भाई वॉल ऑफ द जॉक्सक से स्पर्मेटोगोनिया आते हैं. दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया. जब टेस्टिस में आए तो स्पर्मेटोगोनिया, और अगर ओवरी के लिए गए तो ओगोनिया. तो ये टेस्टिस पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें ये क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया. और मैं ये पहले बता चुकी हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में जो है प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है. ठीक है. फीमेल में तो पहले स्टार्ट हो गई थी ओजेनेसिस, लेकिन बिफोर बर्थ. लेकिन इसमें जो है वो क्या है? बिफोर बर्थ जो है फीमेल में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है. मेल में बिफोर बर्थ नहीं होती है, एट प्यूबर्टी में ही होती है. ठीक है. और फीमेल में oogenesis प्यूबर्टी में होती है और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में हो रही है. अब मेल में ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, दिस इज कैरिड आउट बाय हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द सेल्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस. अब इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर हम देखें तो ये एक बड़ा सा सेल है और ये पूरा दूसरा सेल है. यहाँ पे आप देखो ये जंक्शन से जुड़े हुए हैं. इस जंक्शन से जुड़े हुए हैं तो ये टाइट जंक्शन है. क्यों? ताकि ब्लड टेस्टिस बैरियर बन सके. और ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ ब्लड वेसल्स हैं, कुछ भी आ सकता है. तो इसलिए नेचर ने ये एक टाइट जंक्शन यहाँ प्रोवाइड किया ताकि ब्लड टेस्टिस बैरियर बन जाए और यहाँ से इस ब्लड से कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसे चीज़ यहाँ पे ना आ सके, क्रॉस ना कर सके. तो ये इन सेल का नाम, दीज सेल्स आर कॉल्ड दी sustentacular cells. Sustentacular cells, or you are the Sertoli cells. This is the nucleus of the Sertoli cells. This is one Sertoli cell, second Sertoli cell, third, and between these Sertoli cells are also called the sustentacular or supporting cells. They are supporting the different type of the spermatogenic cells. These are spermatogonia, then the primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, and these are the spermatozoa. So inside the seminiferous tubules, how many cells you have seen? Spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and early spermatid, and the Sertoli cells. These are called the spermatogenic cells. Spermatogenic cells कौन से हुए? Spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and early and late spermatid. बाकी ये जो सेल हैं Sertoli cells, they are not included in the spermatogenic cells. They are the supporting cells which support, provide nutrition, provide barrier for these spermatogenic cells. ठीक है. ये cells
कहाँ पे मौजूद हैं? इस पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल ये एक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूबुल और यहाँ दूसरी हो सकती है, यहाँ तीसरी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बीच में दो ट्यूबुल्स के बीच में एक इंटरस्टिशियल टिश्यू है, उसके अंदर देखें आपको एक और सेल मिल रहा है जिसको कहते हैं लैडिक सेल्स। दे सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जो सेल मैंने आपको बताया उनके फंक्शन लिखे हुए हैं। दी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जिसमें मैंने आपको नाम बताया स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड एंड दी स्पर्मेटिड। The second cells were the Sertoli or sustentacular cells. The function of the sustentacular cell is very important for the both point of view, BCQ and OSP. Junction form the blood-testis barrier, nourishment to the spermatogenic cell, carry out phagocytosis, control spermatogenic movement, produce fluid for transport, secrete the hormone inhibin. दी लैडिक सेल्स जो मैंने कहा था दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, वहाँ पे मौजूद हैं। दे आर लोकेटेड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इनसाइड नहीं है, बिटवीन है। एंड दे सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन। दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक BCQ आता है कि भाई स्पर्म जो है अपनी मूवमेंट कहाँ पे एक्वायर करता है, स्टार्ट कहाँ करता है? इनसाइड द एपिडिडर्मिस। is a collection of the coiled microscopic tubule together 20 कितने फीट है? 6 मीटर तक, 20 फीट और 6 मीटर कलेक्ट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म को, और एक्वायर द स्पर्म यहाँ पे एक्वायर द एबिलिटी टू मूव, ये BCQ आता है। उसके बाद ये स्पर्म जो है वास्ट एफरेंस है, वास्ट एफरेंस में एंटर होता है। नाउ दी पार्ट्स ऑफ द स्पर्म, ये भी OSP में डायग्राम रखते हैं और इसके पार्ट्स बहुत अहम हैं और हर पार्ट के में क्या मौजूद है वो आना चाहिए। ठीक है।